skill set. A warm good evening to one and all present here. I welcome you to the webinar on the cybersecurity of BST Digital Smart Generation SubSmart 2.0. I'm Agasha, Pro from the Kerala State, and I'm a facilitator for BST Digital Smart Generation SubSmart 2.0. Two prayers is a way of life. Our prayers do make a difference because listening is the beginning of the prayer. The power of prayer is in one who hears it outside of us. Now I request everyone to raise up for the Bharat Scouts and Guides prayer. दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। Thank you, everyone. Please be seated. Sunshine is a sign of welcome, which brings a lot of brightness. It's now time to call our dynamic, supportive leader, Ms. Darshana Pavaskar, Joint Director of Guides, Bharat Scouts and Guides India, to come up with the welcome address and bring brightness to this event. Ma'am. Thank you, Akash. And I guess the technical part is not helping me, supporting me with my video. Can you guys hear me? Yes, ma'am, please. Okay, great. A very warm welcome to all the members present here on this Zoom webinar and also on the live channel, which would be going on. Yes, cybersecurity plays a very, very, very important role post-COVID because there were so many things which we did. We did not know how to handle WhatsApp. From there, means we should know the journey from DD, Doordarshan, when we were small. From there till the DD after COVID. So DD in COVID, after COVID is the digital Dadi or digital Dadaji. From the difference in these two DDs we should know. And yes, along with that, it's very important that technology is not always going to be what we know, but it's a big, big, big ocean, big sky. And there's so many things which keep on changing. So many settings are there which we should be aware of. So many issues, so many virus. Like for example, when we knew virus was something to do with our biology, with HIV virus is what we knew. But then we did not know virus is something connected with technology, and that can also affect our data. The data which is there with me in my house, someone from Uganda can access it. So many things, so many don't know factors. बहुत सारी चीजें हमें ऐसी थी जो हमें पता नहीं, वीडियो कैसे ऑन करते हैं, ईमेल्स कैसे भेजते हैं, व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर करते हैं, व्हाट्सएप को कैसे हम लोग डेस्कटॉप पर भी यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी इज अ वास्ट ओशन of positive and people who also make it negative for people, like hacking and things.
We have got our expert today, Jitesh Seth. He has a huge experience into technology and IT field, which he's going to share with us. I really welcome Jitesh sir on behalf of the Bharat Scouts and Guides National Headquarters and Team Serve Smart on this webinar. Sir, we are looking forward for a wonderful learning experience and thinking thoughts from you. Thank you for making yourself available and welcome everyone on this platform. Welcome. Thank you. Thank you so much, ma'am. Even even we can't see you, but your voices really made even more blessed. And once again, thank you so much for formally beginning the event, and a warm welcome to you, ma'am, also. So let's move ahead. The whole secret of a successful life is to find out what is one density to do and then do it. I'm literally our joy to take an immense pleasure to welcome our guest, Mr. Krishnaswamy, Executive Director of the Bharat Scouts and Guides India, to share his words about the event and bless this gathering. Sir? I think he is facing some kind of internet problems. So by this, let's move ahead once again. So without his presence, we are moving ahead. So keep your face always to the sunshine, and the shadows will fall behind you. We are very curious to know about what is the cyber world, for which now I would like to invite Ms. Madhushree KS, Project Coordinator of BS Digital Smart Generation, Smart 2.0, for the introductory part. Madhushree ma'am, the screen is all yours. Thank you so much, Akash, for inviting me. And yes, how many of you know what is cyber world or what is cyberspace? Can anyone tell me? Okay, Akash knows. Okay, apart from Akash. You can also put that in the chat box, and YouTube viewers, you can comment in the comment section. What do you know about the cyber world or cyberspace? Anyone? Please write it in the chat box. Yes, please. Yes. Okay, it is a digital work. Okay, fine then. Then what it is? What do you like? If I say what is like the word cyberspace or cyber world, what comes to your mind? You can just tell me. Yes, Akash, what comes to your mind? Thing what once I know, like heard about the cyberspace, it is something like connecting with millions and millions of people within a jiffy, where we will get more and lots of information, and we will experience new things second by second. Okay, fine. Thank you. Yes, many are saying that it is a virtual world, digital space, digital communications transfer. Okay, something done by online using desktop or phone. Okay. Okay, fine. Now I'll let you know what is cyber world. Okay, the cyber world or cyberspace, it is more than just the internet. Okay, it refers to an online environment where many participants are involved in a social interactions. You know what is social interactions, right? Yes, I remind hacker movie. Yes, Sweetie Shah. Okay, and we also like here in the cyberspace, they also have the ability to affect and influence each other. And here, the people in cyberspace through the use of like
people interact in the cyberspace or cyber world using digital media. For example, like to create some media or to share some media, like something like a particular post or a particular message where you will be sharing that in the cyber world. Okay, and through internet based social networking sites such as Facebook or Twitter or Instagram, people can remain connected to their loved ones. Like now we all are connected through the internet, through internet via Zoom platform. So this is a cyberspace where we all are connected to learn something different, like learn something about the cybersecurity. So this is what the cyberspace does. And when people are online, most of them engage in activities that leave a digital footprint. A digital footprint refers to all information that found online about a person. For example, you post something in the online. So you post a post, like photo in the Instagram or a video in the Facebook or any tweet in the Twitter. That is a digital footprint about yourself or about any other person that you are living in the internet. This is what a digital footprint is, and this also remains in the cyberspace or cyber world. Now I think you all got to know what is cyberspace. Am I right? Yes, you can put S in the chat box. Yes. Oh, okay, I got thumbs up. Yes, I got heart. Okay, yes. Thank you so much, and over to Akash. Yes, thank you so much, ma'am. Within a short period, you easily helped us to know what is a cyber. And with this, we are moving ahead. Speech is the mirror of the soul. As a man speaks, so his personality also increased. So let me invite our today's esteemed speaker. Yes, Akash, just a minute. We have Krishna Swami sir with us. Okay. So let me invite Mr. Krishnaswamy sir, Executive Director of Valid Scouts and Guides India, to say a few words about the event and bless this gathering. Good evening to all. So acquiring knowledge is always good to have our mind refreshed. Basic instinct of human is to do good only, but the external environment may create some sort of emotions within us that can have impact on our working. So usage of internet or the facilities that is extended online are also used by some miscreants to create some sort of fear. Even we can say big terror attacks on the cyber networks are made so that people get afraid of using these things. Why these are happening is, if a platform like Unified Transfer Portal of India, UPI or BMAP, if many people start using it, corruption will go away. So the people, those who are connected to things like corruption, cheating, so they will always feel like that let us create an environment of terror. So people will not go to banks to have a credit card. They will not use ATMs. They will not use apps. So when we think of why we should be aware of the dangers of internet or usage of things that are on the web or the systems that we use, first of all, we need to learn how to protect our safety and how we can overcome the problems of hacking or bullying, all that is coming into the peaceful use of the internet. So the efforts of WACS since long has been to create awareness through various programs
including the first initiative of SurfSmart, how to use the internet safely. So being member of the Bara Scouts and Guides, we contribute to the output that WACs need to bring in to create a safe environment for all youth, especially to the young women. So use the internet. So this webinar hosted by Bara Scouts and Guides today is one step on that direction. So I congratulate all those who are joining this. And again, I will tell that English is not the medium of our communication at home. So those who can understand English, please make note of things in your regional language. Share with people, those who are with you, family, friends, so that they get the advantage of the benefit of this seminar. I wish all of you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Once again, thank you so much, sir, for your stimulating speech, and it was indeed very helpful. So speech is a mirror of the soul. As a man speaks, so is his personality. Allow me to invite our today's esteemed guest, Mr. Jitesh Seth, Headquarters Commissioner, Scouts, Karnataka State. Mr. Jitesh Seth, who is delivered head of the Tata Consultancy Services Technologies with more than 17 years of experience in software world, again the transformation leadership to credit. A decade-long career in the mobile industries comprising for mobile applications and modern house of software development. 7 years in automotive industry, leading the highly skilled and committed team for more than 300 plus associated in the area of infotainment. He believes in his positive change, growth as an organization and a lead by example. He is also a certified Circle Master with a drive to strive for better on time every time. An article written by Mr. Jitesh Seth in People versus Technology Manager. He is one of the motivational leader award with the People Management Champion Award by the Tata Consultancy Services, Kudos and Sport Award of Nokia India Private Limited, Special Award of the Sport Award, Employees of the Month Award by the Krisa Education and the India Private Limited. So by this, let me invite Jitesh sir to take over the session. Jitesh sir. Hey, thank you so much. I hope I am audible. Yes, sir, please. Great. Okay. Madhushri, if you can provide me with the sharing access for a different device that I have just pinged, that will be helpful. So I hope you got the access. Yes, I do have the access now. Thank you so much. I'm just sharing my screen. Please confirm the visibility of screen before we start off. Sure, sir. Yeah, great. Yes, sir. It's okay. Okay. Thank you, Akash. Thank you so much. Your brief introduction reminded me of many aspects of my past, of my career, which was pleasant. Thank you so much. Respected Executive Director and the current Acting Director, respected Darshana Madam, her team, and my dear participants who are on Zoom and on YouTube and everyone around. The topic of cybersecurity today is, in my opinion, one of the most relevant topics, given the fact that we have learned to live in the digital world. There was a time when we never could imagine that being at home, we could still work, earn, and continue our living. Of course, nothing is 100%. There are always exceptions, but largely and fairly, we have been able to achieve, be it the education system, be it the atmosphere of working in office to be brought at home, or for that matter, even the mode of payment, which has now largely got onto the digital mode. जैसे कि हम कई बार जब हम बाहर जाते हैं, तो पहले का समय था कि अगर आपके पास कैश नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप शायद कुछ खरीद नहीं पाओगे। फिर एक समय ऐसा आया कि अगर कैश नहीं है तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं तो कार्ड अपना चल जाएगा, which is plastic money.
लेकिन आज के दौर में जो हालत है वो ये है कि अगर आपके पास प्लास्टिक मनी नहीं है, एक्चुअल करेंसी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आपका मोबाइल फोन है तो आप जो चाहे कर सकते हो. The mobile phone has become one single key to the entire gamut of things that you would want to perform, be it your purchase, be it your communication, be it your photography, anything that you can think of, your mobile phone is one single source. Fascinating, isn't it? But is that really so? So let's have a look into what exactly the digital world is doing to us and what is it that we got to look forward to. So with this, a quick brief in terms of what is cybersecurity. When we talk about cybersecurity, it encompasses of two different words. One is cyber, the other is security. So cyber, I will not dwell into the details. Madhushri has very well put across what exactly the cyber world is all about. It's all about the digital data, if I have to put it in a simple term. अगर एक सिंपल टर्म में हमें साइबर के बारे में बात करनी है तो जो भी हमारा डेटा है जो डिजिटल फॉर्मेट में है उसको हम साइबर बुला सकते हैं. अब डिजिटल फॉर्मेट क्या है? जैसे कि हम अभी जो टेक्स्ट आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं वो डिजिटल नहीं है, वो एनालॉग है, क्योंकि आप डी को डी की तरह ही पढ़ोगे, आई को आई की तरह पढ़ोगे. लेकिन जो डिजिटल डेटा है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस. जो भी डेटा आएगा या तो 1 में आएगा या फिर 0 में आएगा. 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ. तो इस डेटा को हम बोलते हैं बाइनरी डेटा. यस स्वीटी, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट. दैट्स कॉल्ड बाइनरी डेटा. तो इस बाइनरी डेटा का जो कॉम्बिनेशन है और जो ये बाइनरी डेटा ड्राइव करता है उन डिवाइसेस को हम डिजिटल डिवाइसेस बुलाते हैं. और एनी ऑफ द कंटेंट which you are able to share between devices and make sure that there is connectivity and that world where you are able to live virtually is what we call as cyber. Now in this cyber world where you live virtually, जैसे हम अपनी दुनिया में जहां हम रहते हैं वहां जहां हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है. सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि घर के बाहर कोई सिक्योरिटी खड़ा हो. सिक्योरिटी के बारे में हो सकता है कि आपका जो लोकल सिक्योर सिस्टम है, जैसे कि आपकी पुलिस फोर्स है, हमारी आर्मी है. सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी, करेक्ट. सिमिलरली हमारा जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहां पर भी हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है. और वो जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है, उसे हमें सुरक्षित रखना है. वरना इस डेटा को यूज करके जो क्रिमिनल्स हैं, जिनको हम साइबर क्रिमिनल्स बुलाते हैं, उस डेटा को यूज करके वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो इसको नहीं करने देना है, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी की जरूरत है. और इस सब्जेक्ट जहां पर साइबर वर्ल्ड में आपको सिक्योरिटी की जरूरत है उसको हम बुलाएंगे साइबर सिक्योरिटी. So the world, the virtual digital world where you are living, and yet you got to make sure that you are keeping your data, you are keeping your virtual self secured, is called as cyber security. So cyber security is all about protecting in an data that is in an internet connected world and making sure that including your hardware, software, and anything involved in this cyber world is taken care of. Okay, so with this, let me move on to the next slide. Before we get into the digital world, let us understand how the evolution of digital world happened. जैसे कि आज हम जो मोबाइल फोन्स यूज करके एक दूसरे के कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. इसका एक एवोल्यूशन हुआ है. तो एवोल्यूशन कैसे हुआ है? द वर्ल्ड which was far apart, where
if you had to speak to a person in a different city, in a different town, you might have to call the operator, tell them to establish a connection, and only after that you could speak. पहले हम उसको बुलाते थे, एसटीडी कॉल्स बोल सकते हैं आप उसको, या फिर ट्रंक बुकिंग करके बोलते थे, जहां पर आप किसी और स्टेट या किसी और डिस्ट्रिक्ट के आपके किसी भाई बंधु से अगर आपको बात करनी है तो आपको पहले ट्रंक बुक करना होता है, जहां पर आप अपने जो कॉलर होते हैं, he would pick up a call and make sure that the booking is done. उसके बाद फिर से उनको टेलीकॉम एक्सचेंज से कॉल आएगा कि आपका कॉल कनेक्ट कर रहे हैं हम, और फिर आप बात कर सकते थे. सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड यूज्ड टू बी. और अगर आपको किसी को खत लिखना है और वो अगर किसी और देश में है तो कम से कम 10 से 12 दिन का समय लग जाता था, अनलेस इट इज एयरमेल. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नाउ इन अ पॉइंट वेयर द वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स. दुनिया आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आप घर पर बैठे कभी भी किसी के साथ जाकर भी वो हो, वहां आप उनके साथ बात कर सकते हैं, वहां आप उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और यहां तक कि आप उनके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट द चेंज दैट वी आर सीइंग इन कनेक्टिविटी टुडे. एंड ऑफ कोर्स द ट्रेंड ऑफ द लाइक्स. आज मैंने फोटो शेयर किया, मुझे आज 340 लाइक्स मिला है. इमीडिएटली देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग्स द फ्रेंड्स. नहीं, मुझे तो 400 लाइक्स मिल गया ऑलरेडी. Right? There are various emotions that come in together. There are various topics that are being spoken of, and that you get to know to say what is happening around. All right? But when you are sharing this data online, be it on Facebook or be it elsewhere, how careful are you to understand who is able to access your data? How vigilant are you to make sure that there is no unnecessary access to the data? And this is where we have to be very cautious. Yes, likes are good, virtual friends are good, but are you allowing them to misuse yourself? This is a question for you to ask yourself every time when you post something on social media. Let's go forward. So when we spoke about the trunk booking to the point where you are able to make an instant call, there has been evolution of technology leading to a point where we call today as Internet of Things, or it is called as IoT. 1983, this is the time when internet was born. Internet का मतलब है कि अलग अलग कंप्यूटर्स को अगर आप कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं तो उसको हम इंटरनेट बुलाते हैं. लेकिन इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रह पाए. इसके आगे 1985 में सेलुलर टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ते गए. सेलुलर टेक्नोलॉजीज का मतलब है वायरलेस टेक्नोलॉजीज. जो हम अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो भी एक सेलुलर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है. इसके बाद और आगे बढ़ते हुए 1997 में सोशल मीडिया शुरू हुआ. सोशल मीडिया का ट्रेंड इनिशियली ये था कि लोग अपने ही सर्कल में, अपने ही दोस्तों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे. लेकिन आज का ट्रेंड ये है कि वो अपने सोशल सर्कल में ही सीमित नहीं रहा. जहां कहीं भी उनको लगा कि कोई है जो शेयर करते हैं अपने इंटरेस्ट्स को, और जो शेयर करते हैं कि जहां अपने तरह के लोग उनको मिल पा रहे हैं, where they have a common interest, where they are able to share their views, thoughts, opinions, where they are able to discuss, then they get connected on the social media. And 2003 के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शुरू हुआ. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जहां पहले हम इंटरनेट में सिर्फ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया करते थे, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा है. अब जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो भी एक आईओटी का हिस्सा है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो लेटेस्ट डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसको आपको मशीन के अंदर डाल करके पिन डालने की कभी कभी जरूरत नहीं रहती है. सिर्फ एक बार अगर आप टैप करोगे
तो आपका जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप अगर मेट्रो ट्रेन यूज कर रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आपको सिर्फ एक टैप करना होता है उस कार्ड का, जिससे दरवाजा खुलेगा और पेमेंट भी हो जाएगा। तो दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस तरह से आजकल के हमारे सारे छोटे मोटे जरूरतों के लिए हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स जाने अनजाने में यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जहां हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है कि जहां पर डेटा एक्सचेंज हो रहा है उस समय वहां कोई है जो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। ये कैसे सुन रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे समझ रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अलेक्सा। जहां तक मैं जानता हूं हर कोई यहाँ पर अलेक्सा से वाकिफ होगा कि अलेक्सा जो है एक वॉइस बेस्ड डिवाइस है। आप अलेक्सा से पूछोगे कि अभी क्या टेम्परेचर है तो आपको बता देगा कि अभी 30 डिग्री सेल्सियस है इंडिया में, बैंगलोर में। आप अलेक्सा से बोलोगे कि ये गाना चला दो, इमीडिएटली आपके लिए गाना चला देगा। और जब भी वो आपका काम करता है, जब भी आपकी हर बात वो मानता है या मानती है, तो आपको एक तरह की खुशी मिलती है कि मेरा कोई असिस्टेंट है जो मेरी हर बात सुन रहा है ना। लेकिन क्या आपकी बात सिर्फ अलेक्सा तक ही सीमित है? क्या जो आपके कमांड्स है, जो आपके चॉइसेस है, वो सिर्फ अलेक्सा तक ही सीमित है? नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो है एक यूजर है, ठीक है। जो यूजर होते हैं, जैसे कि मैं या आप, वो हमेशा से एक कमांड देते हैं और उस कमांड का अर्थ होता है कि ये जो डिवाइस आपका है, अलेक्सा का जो डिवाइस है, उसे उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ये छोटा सा डिवाइस जो आपके घर में है, क्या वो समझ सकता है कि आप क्या बोलना चाहते हो? द आंसर इज नो। तो ये डिवाइस क्या करता है, जो माइक्रोफोन से जो डेटा आता है, जब आप बोलते हो तो आपका जो वॉइस सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद वो डिजिटल डेटा बनता है इन वंस एंड जीरोस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस। इस डिजिटल डेटा को सर्वर पे फिर भेजा जाता है एंड सर्वर पे इस डिजिटल डेटा का प्रोसेसिंग किया जाता है जानने के लिए कि आगे क्या करना है। उसी के बाद आपका जो डिवाइस है, जो अलेक्सा डिवाइस है, वो आगे का एक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछ रहे हो कि अभी टेम्परेचर क्या है, तो अलेक्सा उस कमांड को क्लाउड सर्वर पे भेजेगा, जहां से उसका रेस्पॉन्स आएगा और वो आपको बता पाएगा कि अभी क्या टेम्परेचर हुआ है। लेकिन क्लाउड सर्वर पे जो आपने कमांड भेजा है उसको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि अलेक्सा को यूजर बिहेवियर जानना है, यानी कि आपके बारे में, यानी कि आपका जो बिहेवियर है, आपके जो चॉइसेस है, आपका जो प्रेफरेंस है, उसके बारे में उसको जानना है। उस जानकारी के लिए वो अपने डेटाबेस में, अपने सर्वर पे सारी जानकारियों को वो रखे रहेगा। जब आप अलेक्सा के साथ बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अलेक्सा सोया है और झट से उठेगा और फिर आगे आप जो बोलोगे सिर्फ उसी को सुनेगा। अलेक्सा हमेशा आपकी हर बात को सुन रहा है, सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अपनी पर्सनल ऐसी बात कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज शेयर कर रहे हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ आपके तक और आप जिससे शेयर कर रहे हैं उनके तक ही सीमित है। लेकिन अगर ये डिवाइस आपके घर पे है तो शायद वो भी सुन रहा है, शायद वो इस बात को भी क्लाउड सर्वर पे भेज रहा है, जहां पर शायद उसको सेव किया जा सकता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अलेक्सा आपके लिए इंट्रूशन के लिए रखा गया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अलेक्सा आपकी हर बात को सुनता है। और ऐसे ही सारे डिजिटल डिवाइसेस जो है, जो वॉइस एक्टिवेटेड है, वो आपकी हर बात को सुन सकते हैं। यस स्वीटी, यू आर राइट। इफ द डिवाइस इज स्विच्ड ऑफ, इट कैनॉट हियर यू। अगर डिवाइस को आपने स्विच ऑफ करके रखा है
तो कनेक्टिविटी नहीं होगी और वो आपको नहीं सुन पाएगा। लेकिन अलेक्सा को अगर आप स्विच ऑफ करके रखोगे तो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वॉइस कमांड देने से पहले जहां अलेक्सा रखा है वहां तक आपको चल के जाना है, उसको ऑन करना है, कनेक्ट करना है और फिर आपको कमांड देना है। इससे तो अच्छा है कि आप खुद कर लो, राइट? So your Alexa is always on. Similarly, any voice assistance device is always on. But how we are going to use, आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं, यह महत्व की बात है। आईफोन्स जो यूज करते हैं स्पेसिफिकली, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी वो वॉइस कॉल पे होते हैं, वो नेटवर्क का जो सिंबल है वहां पर एक ऑरेंज कलर का डॉट दिखेगा। जब वो वीडियो कॉल में है वहां उनको ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा। इन दो डॉट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपका फोन ऑन है और अगर आपके फोन का कैमरा यूज हो रहा है तो वो ग्रीन डॉट दिखाएगा, और अगर आपके फोन का सिर्फ माइक्रोफोन यूज हो रहा है तो वो आपको ऑरेंज डॉट दिखाएगा। तो ये इन यूजर को बताने के लिए है कि उनके फोन का कौन सा हिस्सा यूज हो रहा है। अभी इसका क्या महत्व है, अगर कोई आपके फोन को हैक करके आपके फोन के कैमरा से अगर वो ताक-झाक कर रहा है, तो ये ग्रीन डॉट आपको मदद करेगा ये जानने के लिए कि आप वीडियो कॉल पर नहीं हो फिर भी आपके फोन का कैमरा एक्सेस किया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप वॉइस कॉल पे नहीं हो लेकिन अगर आपके फोन पे ऑरेंज डॉट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपके फोन का माइक्रोफोन यूज कर रहा है और आप जो भी बात कर रहे हैं वो सुन पा रहा है। हालांकि ये बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन ये कब बढ़ते हैं, कब किसके साथ होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इसकी अगर कोई गारंटी दे सकता है तो वो है हम खुद, क्योंकि हमें अपने डिवाइसेस को ठीक तरह से यूज करना है और हमें अपने डिवाइसेस के प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा सही तरह से रखने हैं। तो एक एग्जांपल था अलेक्सा का जो हमने डिस्कस किया। मैं आपको बता दूं, इतना मैंने बताया है, लेकिन जो कंपनीज है जो वॉइस असिस्टेंट्स को डिजाइन करती है, चाहे फिर अलेक्सा हो या गूगल हो या एप्पल का सीरी हो, कोई भी वो वॉइस असिस्टेंट हो, वो लोग इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि सिक्योरिटी के बारे में पूरे से पूरा ख्याल रखा जाए। ये लोग इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहे और किसी को ना दिया जाए। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जब सिस्टम को हैक किया जाता है तब डेटा कौन यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो इसलिए हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान अपने आप रखना पड़ेगा डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, तो हम अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? मैं यहाँ पर एक 30 सेकेंड्स पॉज करता हूं और मैं चाहूंगा कि अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसके बाद आपके दिमाग में इस सवाल का जवाब होगा कि हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। तो आपके दिमाग में जो भी जवाब हो, सही या गलत सोचे बगैर, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। Okay, I am not seeing any responses. I hope I am audible. Yes, sir, you are very much audible. Okay, अगर जवाब नहीं है तो maybe we will proceed further. सबसे पहले मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। हम अपने फोन पे या लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप्स पे, जहां पर हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो हमें हमारी जरूरत का कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वो हमारे सिस्टम पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको
ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जिसकी जानकारी ना हमें है और ना ही हमारे सिस्टम को होगी। दूसरा चीज मैलवेयर जो करेगा वो ये है कि अपने हार्ड डिस्क को करप्ट कर सकता है, आपके डेटा को करप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आप अपना डिवाइस ठीक तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक तरफ आपने अपना डेटा खो दिया, दूसरी तरफ आप अपने सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, एंड इस सब के बाद आपको जो करना पड़ता है वो होता है कि आपको अपने कंप्लीट सिस्टम को शायद रिफ्रेश करना पड़े, रीइंस्टॉल करना पड़े, और आपका जो डेटा खोया है शायद आपको फिर से उसके बारे में काम करना पड़े। सो दैट्स अबाउट द मैलवेयर। दूसरी चीज जो है वो है फिशिंग। फिशिंग के बारे में कई केसेस आजकल दर्ज होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है केवाईसी ना होने के कारण, और फिर हम जल्दी में लग जाते हैं कि अपना केवाईसी हमें करना है, और केवाईसी इसलिए करना है क्योंकि अकाउंट को एक्टिव रखना है। तो केवाईसी करते टाइम हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसमें होता है हमारा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, शायद कार्ड का पिन भी मांग ले और सीवीवी नंबर भी मांग ले, और जाने अनजाने में हम सारा इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं। इतना इंफॉर्मेशन उनके लिए काफी है हमारे सारे बैंक अकाउंट्स को हैक करने के लिए, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, और जो भी उनको चाहिए हमसे लेने के लिए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हमें ऐसा कोई मैसेज या ईमेल आ रहा है जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, या जहां हमें सस्पिशियन हो कि ये शायद सही नहीं है, तो उसमें दिए हुए लिंक को कभी भी हम क्लिक ना करें। क्योंकि एक बार अगर आपने लिंक क्लिक कर दिया और अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो इमीडिएटली उसका जो रिक्वेस्ट है भेजना शुरू कर देगा, और बाकी का जो भी प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में होता रहेगा और आपको उसका पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं इस समय ये भी बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फिशिंग का मामला होता है ये ज्यादातर बुजुर्गों के साथ बड़ा ही व्हाट टू से बड़ा ही नेगेटिव बिहेवियर रखता है, क्योंकि घर पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ज्यादातर डिजिटल डिवाइसेस के बारे में जानते नहीं होते हैं, और जो भी उनके समझ में आता है वो उसके हिसाब से करते हैं। तो प्लीज कीप देम एजुकेटेड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ फिशिंग। तीसरा है पासवर्ड अटैक्स। जब भी हमको पासवर्ड रखना होता है, स्पेशली हमारे घर के वाईफाई राउटर का हो सकता है, या अपने सिस्टम का हो सकता है, या फोन का हो सकता है, तो हम एक कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं जो हमारे लिए याद रखना आसान हो। आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ एट आपका फर्स्ट नेम, या फिर आपका फर्स्ट नेम अंडरस्कोर आपका डेट ऑफ बर्थ, या द कॉम्बिनेशन जो आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हुआ हो। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पासवर्ड है उसको हैक करना बड़ा आसान हो जाता है अगर कोई आपको अच्छे से जानता है तो। रिमेंबर वन थिंग, ये जो पासवर्ड हम जब जनरेट करते हैं वो हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज वेरी नेचुरल। तो अगर कोई आपको साइकोलॉजिकली जानता है कि आप किस तरह से सोच सकते हैं और आप क्या करेंगे, तो वो आपका पासवर्ड प्रेडिक्ट कर सकता है, और जनरली जो आपके करीबी दोस्त है या रिश्तेदार है वही इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको हमेशा अपने सोच से थोड़ा परे होकर के एक ऐसा पासवर्ड रखना है जो कोई ब्रेक ना कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके जो करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बातों बातों में अगर उन्होंने किसी और को बता दिया या किसी और के साथ कुछ शेयर कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद में आपको हानि पहुंच सकती है। तो आपके पासवर्ड्स जो है उसको आप बड़ी समझदारी के साथ और शांति के साथ सोचिए, अपनी सोच से थोड़े परे होकर के अपने पासवर्ड्स को रखिए। अपने जो वाईफाई राउटर्स रहते हैं उसका खास करके आप पासवर्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि अगर कोई भी अगर हैक कर सकता है आपके पासवर्ड को, वाईफाई राउटर के पासवर्ड को, तो वो आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, और एक बार अगर आपके नेटवर्क को एक्सेस करना शुरू कर देगा तो नेटवर्क से जुड़े कोई भी सिस्टम को वो एक्सेस कर पाएंगे। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वाईफाई राउटर्स एंड इट्स पासवर्ड एज वेल। DDoS. DDoS is a system where your
accesses or the requests are routed through multiple systems. जैसे कि अगर आप अपने स्कूल पे है और आप एक ओपन नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो उस नेटवर्क द्वारा जिस भी सिस्टम को आप यूज करना चाहें आप यूज करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप हमेशा डिटेक्ट कर पाओगे कि किस सिस्टम ने नेटवर्क को एक्सेस किया है, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट कनेक्टिविटी रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो कनेक्टिविटी लेयर है वो अलग अलग आईपी एड्रेस द्वारा आगे बढ़ता है, और आप जो सिस्टम है उसको कभी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है, कौन आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मैन इन द मिडल, ये मैन इन द मिडल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपके नेटवर्क पे कोई और है जो आपके हर ट्रांजैक्शन को सुन रहा है या देख रहा है, तो वो उस डेटा को कैसे यूज करेगा या इसका पता आपको नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले के जमाने के फोन की बात करें तो क्रॉस कनेक्शंस लगते थे, जहां पर आपकी बात अगर किसी से चल रही है तो कोई तीसरा जिसका क्रॉस कनेक्शन लगा है वो आपकी बातों को सुन पाएगा। वैसे ही आज हम वायरलेस वर्ल्ड में हैं, जहां पर ज्यादातर आप वायर का यूज नहीं करोगे। आपका वाईफाई कनेक्टिविटी ले लीजिए, आपका मोबाइल कनेक्टिविटी ले लीजिए, इसमें आप वायर का यूज नहीं करोगे, लेकिन आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है जिसके द्वारा हम वायरलेसली कनेक्ट करते हैं, कई बार उन फ्रीक्वेंसीज को हैक करके लोग आपके डेटा को यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स में इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं ताकि कोई इसको अटैक ना कर सके। लेकिन कोई और सिस्टम्स होते हैं जहां पर अगर आप वाईफाई ओपन सोर्सेस में यूज कर रहे हैं, जैसे कि मॉल्स में अगर वाईफाई मिल रहा है तो आपको लगता है कि इसका वाईफाई है तो आई कैन यूज इट, लेकिन वो अगर ओपन वाईफाई है, ओपन नेटवर्क है और ओपन पोर्ट है, तो इसका मतलब है कि उस पोर्ट से कोई भी आपके सिस्टम को एक्सेस करके हैक करके आपकी हर बात को सुन पाएगा, आपके हर डाटा को एक्सेस कर पाएगा। तो इस बारे में आपको ख्याल रखना होगा। ड्राइव बाय डाउनलोड, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके सिस्टम में ठीक तरह का एंटीवायरस ना हो तो एक पॉपअप आएगा कह करके कि कोई मैलवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए और वो निकाल लेगा। और अगर आपने अनजाने में उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो आपके सिस्टम पे क्या काम करेगा और उसको क्या डेटा निकाल के कहीं और दे देगा और डेटा को क्या करेगा, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। So you have to be very careful every time when you download any of the software, and you have to make sure that the software that you are downloading is something that you know what you are downloading it for, and also that you know it is going to be used for the purpose that you intend to. Okay, so that's about drive by download. Hello. Moving, I have a question. yes, please. Sir, is spamming is related to phishing? Sorry, come again. Is spamming is related to phishing? See, spamming is not related to phishing, but phishing can be part of spamming. What it means is, in the name of advertisements, in the name of generating revenue, you will receive n number of emails promoting various products and offers. That is called spamming. Okay. Amongst these spam emails, spam means the emails which are irrelevant and unsolicited. Okay. Amongst these emails, there might be one email which has a link with a very good offer. Say, for example, you have an iPhone 13 Pro Max. All you have to do is pay 1,000 rupees and the phone is going to be shipped. And this 1,000 rupees is your shipping charges. Okay. So mail per se is spam because you did not ask for it. It is unsolicited. But if you click on the link to make the payment,
all your credentials might be taken away by someone else. That portion is called phishing. So this is the correlation and the differentiation between spamming and phishing. Hope that is clear. Yeah, okay, sir. Great. All right. So we'll move on to the next part, which is malvertising. So this is kind of spam, but it's more to do with understanding what the user choice is, understanding what as a user your preference is, and based on that there are certain selected ads which keep popping on your web browser. For example, there are certain email tools which when you use free of cost, there are ads shown. But if you take a paid version, the ads are not seen. Similarly, when you are accessing certain sites, including the search engines, there are certain ads that come up. Some may be genuine, some might be malwares. So when you click on an ad, which is a malware, it will try to get the information which is stored on your local computer, laptop, or your mobile phone, or any digital device from which you are accessing, and it will be misused. And it can also corrupt your data locally. And it is all through your malvertising. So remember, whatever you do on your digital device, the local data which is stored, be it in terms of temporary folders or be it in any other format, is always being read by someone. आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कोई नई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो आपको एक पॉपअप आएगा जो कुकीज के बारे में जानकारी देगा कि कुकीज को टेम्पररीली वो लोकल हार्ड डिस्क पे डाउनलोड करेंगे और उसका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होगा, और हम बिना उसको पूरी तरह से पढ़े हम एक्सेप्ट ऑल करके आगे बढ़ते रहते हैं. लेकिन ये जो कुकीज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन कुकीज में छोटी छोटी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जिनको जोड़ करके एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं आज के ऑनलाइन इंडस्ट्री में, और इसी पे आधारित आपको अपने इंटरेस्ट के ऐड दिखाए जाते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट malvertising. The last but not the least, rogue software. rogue software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि आप उनको डाउनलोड और इंस्टॉल किसी पर्पस के साथ करते हो, लेकिन वो काम कुछ और ही करेगा. जैसे कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा जो बोलेगा कि पीडीएफ राइटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप जितने चाहिए पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, जितने चाहिए पीडीएफ एडिट कर सकते हैं. क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमने तो डाउनलोड कर लिया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूज करना शुरू कर दिया. बट जब आप यूज करना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो तो ऐसा कुछ नहीं करता है, ना आपको एडिट करने देता है ना क्रिएट करने देता है, लेकिन वो कुछ और ही मांग रहा है जो आपको नहीं चाहिए, या जो कुछ और ही करने की कोशिश कर रहा है जिसकी आपकी जरूरत नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड रोग सॉफ्टवेयर्स. दिस इज वन कैटेगरी. देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ रोग सॉफ्टवेयर. That category of software will try to slow down your system, because anything and everything that you do on your system, it will read the data. जैसे कि अगर आपने कोई रोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है गेमिंग के लिए, ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका सिस्टम स्लो हो गया है. वो इसलिए क्योंकि अगर आप कीबोर्ड पे की प्रेस कर रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं, आपके हर एक्शन को वो सॉफ्टवेयर रीड करके कहीं तो वो डेटा सर्वर पे भेज रहा है, और इस डेटा को कलेक्ट करके कोई शायद आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है. तो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या यूज करना है, तो जहां तक हो सके जेन्युइन सॉफ्टवेयर को परचेस करके ही यूज कीजिए. और अगर ट्रायल वर्जन भी है तो वो जेन्युइन डीलर
या जेन्युइन ऑनलाइन वेबसाइट से ही आप डाउनलोड करें, चाहे फिर वो आपको सिर्फ 30 डे ट्रायल वर्जन ही क्यों ना दे। लेकिन एक बात की आपको चिंता नहीं होगी कि आपका जो डेटा है वो कैसे, कौन और कहाँ यूज कर रहा है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो these are the 8 reasons, or these are at least the 8 reasons why you need cyber security. I hope that so far I have been able to give a brief on what is cyber, what is security, and why we need cyber security. In the meantime, let me give you a quick introduction of what is Internet of Things, so that we can dwell a little more into it from the cybersecurity perspective. The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data, and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data, and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data, and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019. Result? All right. तो आई होप कि ये जो वीडियो था, इस वीडियो ने आपको एक आइडिया दिया होगा कि IoT क्या कर सकता है। इसी वीडियो के आधारित पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम Amazon, Flipkart और ऐसे कई ऑनलाइन स्टोर से काफी कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं। जब आप इन चीजों को ऑर्डर करते हो तो उस पैकेजिंग पे एक बारकोड होता है, और हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे ही पैकेट आता है, जैसे ही पैकेज हमारे हाथों में रहता है, हम अपनी चीज उसमें से निकालेंगे और पैकेज को ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। द क्वेश्चन इज दैट सेफ टू डू? क्या वो सेफ है कि पैकेज जिस पे आपका बारकोड है
जिस पे आपकी सारी डिटेल्स है, आप उसे ऐसे ही फेंक रहे हैं, गिव इट अ थॉट, सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि जहां तक मेरा ओपिनियन है, इस बारकोड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, पता, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, और इस इंफॉर्मेशन को कौन, कहां, कब, कैसे यूज करेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और अपने तक ही सीमित रखिए। So with this, let me try to give another video, which is the next thing which you are going to see in the industry. We call it as autonomous driving. We call it as self-driving, but fully controlled. So let's go through the video. Jitesh sir, we are missing on the sound. Oh, okay. Sorry, give me a minute. Let me replay it. Sir, still it's not coming. Sir, your video is not audible. Give me a minute. Give me a minute. I'm trying to bring it up. Okay, I guess there is some technical issue. I'm not able to hear myself as well. All right, so maybe we'll get back to the presentation. So what I was trying to tell here through this video is, what I was trying. Is it better now? Yeah, Yes, sir. Yes. Yeah, great. Sorry about that. So I was trying to show across that when we get onto a point where autonomous driving or self-driving cars are a reality, the point here is that there is a navigation system, there is an electrical system, and there is an automobile system along with a telecommunication system which work hand in hand for self-driving cars. Now, when such a system, such a complex system is working to make a self-driving car happen, if any one of the system is hacked, there is a possibility that though you intend to travel somewhere, at the click of a button, a person with malicious intent can kidnap you in your own car without you realizing how it happened. सिर्फ अगर कोई इन चार में से एक भी सिस्टम को हैक कर पाता है, तो वो आपके कार को कंट्रोल कर पाएगा, और अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार में है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन जहां वो आपको पहुंचाना चाहता है आपको पहुंचा सकता है। इनफैक्ट इसी टॉपिक पे एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, जहां पर एक एरोप्लेन को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है एंड एरोप्लेन को वो
जहां ले जाना चाहता है और जिस तरह से ले जाना चाहता है वो अपने घर पे बैठे कंट्रोल कर पाते हैं. So these are all the ill effects if your system is not fully secured. However, as day-to-day users, we don't have to worry about such big things. जैसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो यूज करते हैं वो है सोशल मीडिया, अपने मोबाइल फोन पे कुछ एप्लीकेशंस या फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कुछ एप्लीकेशंस. तो इन एप्लीकेशंस को यूज करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है. क्या है वो चीज? सबसे पहले आपका जो सोशल प्रोफाइल है वो एक दरवाजा है जिससे कोई भी झांक कर देख सकता है. रिसेंटली मैंने एक सोशल प्रोफाइल देखा था जहां पर that person had put across her phone number and shared a message to say, if you want to have good friends, feel free to reach out to me. So are you giving the right picture? Are you making way for malicious intent to creep through? You have to be very careful about it. तो आपका सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है उसको आप बड़े ध्यान से बनाइए और जब आप शेयर कर रहे हैं तो आप उसका ध्यान दीजिए कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल प्रोफाइल आजकल जो है that's the first point to allow someone to enter into your personal life. Second thing is search for network. जहां कहीं भी हमें इंटरनेट मिल रहा है हम उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. कभी कभार ऐसा भी होता है कि ओपन नेटवर्क दिखाता है, जब हम उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे कि आपका नाम और आपका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ. ये सोच करके कि हमें फ्री इंटरनेट मिल रहा है शायद हम उन डिटेल्स को दे, लेकिन उस डिटेल्स को यूज करके और क्योंकि आप अपने फोन को कनेक्ट कर रहे हैं, आपके फोन में एक आईडी होता है जिसको हम मैक आईडी बोलते हैं. इस डिटेल को यूज करके शायद वो आपके फोन को भी हैक कर पाएगा. आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम को लेकर के शायद आपके जो मोबाइल अकाउंट है उसको भी हैक कर पाएगा. तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जो हम उनको देते रहते हैं उससे कोई भी आपको मिसयूज कर सकता है. इसके बाद जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पासवर्ड. जैसे हमारे घर के ताले की चाबी होती है जिसका हम बहुत ख्याल रखते हैं और सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, उसी तरह से आपके जो पासवर्ड्स है आपको उसका ख्याल रखना है और आपको उसे शेयर नहीं करना है. और मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपका जो पासवर्ड आप जब जनरेट करते हो तो आपकी जो रेगुलर सोच है उससे थोड़ा परे हो करके आपका पासवर्ड जनरेट कीजिए ताकि कोई उसको हैक ना कर सके. द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीवायरस. आप अपने एंटीवायरस को भी खाना खिलाइए और एंटीवायरस का खाना होता है रेगुलर अपडेट्स. जैसे वायरसेस अलग अलग आते रहते हैं वैसे ही एंटीवायरस के जो स्कीम रहते हैं, एंटीवायरस का जो डेफिनेशन रहता है वो भी आगे नए नए आते रहते हैं. तो आपको ये जरूर करना है कि आप अपने एंटीवायरस के जो डेफिनेशंस हैं उसको अपडेटेड रखें ताकि आपका जो एंटीवायरस है वो आपके सिस्टम को सुरक्षित रख सके. इंटरनेट जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप किसी के साथ भी शेयर करना पसंद करेंगे? जैसे कि आपके फोन में आपका 4G फॉर एग्जांपल एक्टिव है, तो क्या आप अपने फोन को राउटर बना के किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे? और अगर शेयर कर भी रहे तो किसके साथ शेयर कर रहे हैं? और आपका जो पासवर्ड रहता है हॉटस्पॉट का, उस पासवर्ड को आपने आसान रखा है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर ABCDEFGH कुछ भी हो, ऐसा पासवर्ड जो कोई भी आसानी से हैक कर सके वैसा मत रखिए. और इंटरनेट को आप किसी के साथ अगर शेयर कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो इंटरनेट को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके ओपन नेटवर्क को यूज करके कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण लीगल इश्यूज हो सकते हैं और आप क्रिमिनल केस में भी फंस सकते हैं. तो आपको इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है.
कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, और अगर कोई आपको मुफ्त में कुछ ऑफर कर रहा है तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों हो रहा है और क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। जैसे कि आपको मैसेज आ गया कि आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, आपको सिर्फ 100 रुपये उसके भरने हैं ट्रांसपोर्टेशन के या शिपमेंट चार्जेस, और गिफ्ट आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन उस पेमेंट को करते वक्त आप किन चीज़ों का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और अकाउंट के बारे में क्या डिटेल्स दे रहे हैं, इनको आपको जानना है। सिमिलरली कहीं पर आपको QR कोड दिख गया, बोल देंगे कि QR कोड स्कैन कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और आपको एक इनाम मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि QR कोड जब आप स्कैन कर रहे हैं तो एक ऐसा लिंक ओपन करता है जो मिलीशियस हो, और उसके कारण आपके फ़ोन में या आपके डिवाइस पे जो भी डेटा है, डिजिटल डिवाइस पे जो भी डेटा है, जो भी आपने अपनी जानकारी रखी हुई है, और कोई एक्सेस कर सकता है। एक बात ये भी है कि कुछ लोग अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही अपने पासवर्ड सेव करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। कभी भी अपने पासवर्ड्स को अपने डिजिटल डिवाइस पे सेव मत कीजिए, ताकि कहीं भी अगर किसी और के हाथ लग रहा है तो भी आपका पासवर्ड सेफ होना चाहिए। So with this, the last point and most important point is your mobile phones are today a single source of all your personal information. आपका जो मोबाइल फोन है वो हर एक आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसका एक सिंगल सोर्स है, सिर्फ एक ही सोर्स है। चाहे फिर आप आरोग्य सेतु ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे आप किसी पेमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या फिर आप अपने ही किसी काम के लिए अपना फोन यूज कर रहे हैं, इन हर बात पे एक चीज कॉमन है, वो है आपका मोबाइल फोन। तो आपके मोबाइल फोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए। जो आप पैटर्न बेस्ड लॉक रखते हैं वो काफी आसान होता है किसी को भी अनलॉक करने के लिए। उनको सिर्फ इतना करना है कि जब आप अनलॉक कर रहे हैं, आपका फिंगर मूवमेंट का पैटर्न अगर वो समझ जाते हैं तो आपके फोन को वो अनलॉक कर पाएंगे। तो आप पैटर्न लॉक ना रख के या तो 6 डिजिट पिन रखिए, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन रखिए, या फिर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन रखिए। तो जहां तक हो सके आप अपने मोबाइल फोन को अनलॉक होने से बचाइए जब कोई और करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज your data can be frisked away by someone who it is not intended for. Okay, so with this I have tried to cover a brief overview on cyber security. हालांकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसको हम अगर पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करें तो काफी टाइम लगेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप टेक्निकल टॉपिक्स में चले जाएंगे तो हर एक के लिए नहीं है वो। तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसका एक ओवरव्यू प्रेजेंट किया है, एंड आई हैव ट्राइड टू अलाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी with your day-to-day usage so that you and your family can be safe. So be safe and make sure that your social presence is never misused by anyone else. And the floor is open if there are any questions. Excuse me, sir. Sir. Hello, sir. Yes. सर फायरवॉल यूज कर सकते हैं हम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आते हैं? आपका जो फायरवॉल होता है वो कुछ रूल्स को डिफाइन करने के लिए होता है, जैसे कि आप किस तरह के वेबसाइट्स यूज कर पाएंगे या किस तरह के आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन आपका जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस ये डिसाइड करने में आपकी मदद करेगा कि जो आपके सिस्टम पे प्रोग्राम रन हो रहा है क्या वो सच में एक प्रोग्राम है जिसकी आपको जरूरत है, या फिर वो एक वायरस है जिसको आपको रन नहीं करने देना है। तो ये डिफरेंस है एक एंटीवायरस में और एक फायरवॉल में। तो एक अच्छे सिस्टम के लिए
या फिर एक सेफ सिस्टम के लिए आपको एंटीवायरस और फायरवॉल दोनों को ही यूज करना है। लेकिन जहां पर वायरस की बात आती है या मैलवेयर की बात आती है, आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। और आपको हमेशा याद रखना है कि अपने एंटीवायरस को डेफिनेशंस अपडेट रखने हैं, मतलब अभी जो लेटेस्ट डेफिनेशंस हैं वो सारे अपने सिस्टम पे होने चाहिए। Does that answer your question? Yes, sir. Thank you. Welcome. So what are cookies? Cookies are temporary files which are stored on your local device, and it helps the websites to perform some tasks locally. जैसे आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट से जुड़े हुए कुछ इमेजेस, उस वेबसाइट से जुड़े हुए कुछ स्क्रिप्ट्स डाउनलोड होते हैं, राइट? उसी तरह से उस वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन होता है वो भी डाउनलोड होता है और उसको कुकीज की तरह सेव किया जाता है। तो आपके जो भी एक्शंस हैं वो कुकीज पे काम करते हैं पहले, मतलब लोकली काम करेंगे पहले। उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं तब वो सर्वर से कनेक्ट करता है और उस वक्त वो कुकीज का जो इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन सर्वर पे ट्रांसफर कर सकता है। और अगर लोकल रिफ्रेश करते हैं आप, लोकल रिफ्रेश का मतलब है कि आप नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं लेकिन आप अपने पेज को अगर रिफ्रेश कर रहे हैं तो आपका जो ब्राउजर है वो कुकीज से डेटा लेकर के रिफ्रेश कर देगा। तो एज ए यूजर आपको लगेगा कि डेटा रिफ्रेश हुआ है, बट रियलिटी में सर्वर से डेटा नहीं लिया गया है, वो आपके लोकल मशीन से ही रिफ्रेश हुआ है। सो दैट्स कुकीज। सर एक्चुअली मेरे को कुकीज का आइडिया वहां से आया जब मैं एक वेबसाइट खोली तो वहां पे एक जैसे स्पैमिंग करके एड्स वगैरह आती है, तो वहां पे मैनेज ऑल कुकीज का ऑप्शन आ रहा था। अगर इफ वी आर नॉट क्लिकिंग ऑन देम देन द वेबसाइट इज नॉट gonna open, so I have to click on this. So what is that? So there you have to accept the cookies, क्योंकि जो आपका लोकल पेज है वो कुकीज से ही डेटा लेके काम करेगा। ओके, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्पररी फोल्डर है और आपका जो टेम्पररी फाइल्स है उसको आप टाइम एंड अगेन क्लियर करते रहे और जहां तक हो सके आप उसको स्कैन करते रहे। Sir, is there any risk to accept that रिस्क link? तभी है जब आप मेलिशियस लिंक पे क्लिक करते हैं, और मेलिशियस लिंक वो है जो आपने रिक्वेस्ट नहीं किया है बट आपको शायद किसी मेल में, किसी एडवर्टाइजमेंट में, या फिर जहां आप सर्च इंजन यूज करते हैं शायद उसके अंदर भी आपके पास एक लिंक आएगा कह करके कि क्लिक दिस लिंक फॉर ए सरप्राइज, क्लिक दिस लिंक टू डाउनलोड ए फ्री सॉफ्टवेयर। तो ये सारे मेलिशियस लिंक है। तो जब आप मेलिशियस लिंक पे क्लिक करते हो तब उसका रिस्क बढ़ जाता है, और अगर आप डेजिग्नेटेड वेबसाइट पे है तो यू कैन गो विथ इट, उतना रिस्क नहीं है उसमें। Okay sir, thank you. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? सर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट स्कैम से कैसे बच सकते हैं? ऑनलाइन स्कैम से बचने के कई तरीके हैं। सबसे पहले कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि 2 डायमेंशनल सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, कम से कम 2 डायमेंशनल सिक्योरिटी। फर्स्ट डायमेंशन है, ओके फाइन, मे बी आई विल टेक दिस एज लास्ट क्वेश्चन दर्शना मैम। सो पहला आपका डायमेंशन है कि आप अपना ऑनलाइन पासवर्ड देते हैं, और दूसरा डायमेंशन होता है ओटीपी, क्योंकि आपके पास जो ओटीपी आएगा वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई लिंक आ रहा है जिसकी आपको जानकारी नहीं है तो उसको अभी क्लिक मत कीजिए, और किसी भी पेमेंट को 2 डायमेंशनल अप्रोच में ही कीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा।
Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, so I am done from my side. I think we can move to the next topic. Yes, before moving ahead, I have final request from the participants that yes, I'm so sorry for the inconvenience occurred by me due to heavy rain in Kerala and thundering. I can't able to open my video anymore. I'm so sorry for the inconvenience occurred by me. So yeah, so yes. So if you have any kind of inquiries, please once again I'm asking that if you have any inquiries, please let us know. You can unmute yourself and put in the chat box because as usual, Jidesa has did Jidesa brings something really special as usual he did. So it's really great, immense pleasure that he has been very Yes, I think Akash is having some network issues. Yes, thank you so much, Jitesh sir, for sharing such a wonderful information with all of us. Yes, life is not a problem to be solved, but reality to be experienced. Now, let's watch a video in regard to the digital safety. So here we go, and please enjoy. Say hi to Alia. She loves playing games and watching cartoons on the internet. The internet is like a busy road with lots of traffic in all directions. This traffic is called data. The games, videos, cartoons, and emails travel over the internet as data. While internet seems spectacular from outside, it has many unknowns inside. Use it very carefully to stay safe. Every day, Alia goes to school and enjoys the computer class like all other kids. She learns that the computer has something magical inside called the internet. It's the same thing on the new mobile phones too. The internet lets you do many other things, even make new friends. It can get infected with viruses, which can harm your computer. So be very careful. Here's how you can stay safe and enjoy the internet. Before using the internet, always ask an adult if the computer has a firewall and antivirus working. Together, they protect your computer against many different kinds of viruses that attack our computer and steal our data. Remember, if you are using email, always keep your email password a secret. Make sure no one sees it, not even your friends. Let only your parents know your password. Avoid saving your password on any computer or mobile phone. Email is great to keep in touch with friends, but remember to log out or shut down every time you're done. It's also important to know that you should not click any links or ads in your email or internet. Always ask an adult before doing so. These may contain viruses. With your regular studies, the internet is a great tool to learn and be smart. If you don't have a computer at home, cyber cafes can help you log on to the internet, where you can play games or watch videos. But here also, never click on links or any pop-ups. Always take the supervisor's help. Many movies are not made for children. Similarly, there's a lot of content on the internet that you should stay away from. Always alert your parents if you or your friends come across anything violent or for adults. You may also be using social networks like Facebook, Snapchat, Instagram, and Musical.ly to chat with friends and make new ones. Good girl, Alia. That's the best way to stay safe.
Also, you should not give your personal information on the internet when downloading a game. It can be stolen. You may find free Wi-Fi networks in public spaces to surf the internet for free. Never connect to them, as they're not safe. Social networks are like a playground. You have your friends in that space, and you may also make new ones. But not all want to be friends, even if they seem friendly. On any social network, never accept friend requests from anyone you don't know, and never share your details with anyone either. Details like your name and age, school and address, your current location, or anything else about your family. These strangers may look friendly and may talk nicely to you, but do not trust them immediately. Some strangers can follow you, bully you, and sometimes even hurt you and your family. And finally, if someone does bully you on the internet, don't worry. Inform your parents right away. Don't be scared because it's not your fault. So, if you follow the rules like Alia, you too can have fun, communicate with friends, and learn on the internet. Just remember the safety tips and keep on playing and surfing. Yes, I think now you all have got a brief by this video. And now it's time to move on to our next topic, that is panel discussion. We have a panel discussion with Jitesh sir and Noben and Vedadri. I welcome all three of you to the panel, and we have few questions for you all to answer. And yes. Hi, Noben. Yeah, hi. I hope Vedadri is also here. Hi, Vedadri. And hello, Jitesh sir again. And Yeah, hi, Madhu. Hi, Nobin. Hi, everyone. Hello. yes. Yes, Noben and Vedadri are our facilitators for our BSG Digital Smart Generation Surf Smart 2.0. And Vedadri works like before he was working in one of the cybersecurity company, and Noben is an ethical hacker who supports both of them are supporting us voluntarily to make and cyber security also. Yes, welcome Jitesh sir again, and I have a few questions for you three. Okay, so first we will go with Vedadri. Vedadri, like, can you please just tell me some important things, or like how we can protect our devices from the viruses? Yes, of course, Mansi. Yes, first of all, my whole hearty thankfulness for Jitesh sir. So most of the information what you have given today is most of the part I also don't know being a professional in this field. Thank you very much, sir, for that. And coming to your questions, Mansi, can you give me access for screen sharing? Yes, Vedadri, sure. Yes, you have the access now. Yes. Just a minute. Yeah, see, first of all, being as a citizen of citizen and more visible person to the internet act, we need to follow most preventive methods to come over these cyber attacks. So most of the information has given by Jitesh sir itself. So from my side, what I want to mention is. We have to be more conscious and well we are using our social networking sites with some preventive methods. So coming to them,
See, first of all, if you see our desktops and laptops are most vulnerable to the cyber crimes. If you see on my screen, as we see, 70% of desktops are the more relevant parts of the cyber attacks. And smartphones are 61%, tablets are 53%, and 50% from wireless access points, and 50% for server points, and 40 in this way. And leading malware carriers for emails only as nowadays. In most in while browser while we're using browser, uh, we can go over this thing on websites to 6.3% and other by 1.3%. So uh, we are having the information about all the attacks was explained by Jitesh sir. I will do some practical way. See here, if you see the phishing attacks here, see this is the uh, one mail which we got. Okay, so uh, here under here one link is there, particular link. So this is the attractive link which the attacker sends us to attract us. So this particular thing is known as phishing attack. Uh, and this is one type of phishing attack which can be offered by our enemy in this total scenario. So we should be conscious while we are watching our emails and messages also in mobiles. See here, this type of messages we received from daily routine in this 2020 from the past 3 years we are getting this type of attacks in a very common way. Okay, so we should be so conscious while we are we should be so conscious while we are using our messages and while we are watching our mobile things and all. And coming to social sites, say here, see even our Elon Musk Twitter account also has been attacked by these persons. And what are the prevention method? See here, one of the safety measures for what we should be used is virus total is the basic thing as a profession we are using in this cyber fields. Those are see this virus total and abuse ID. These are both tools nowadays. It protects us from most vulnerabilities, malwares, whatever it might be. While the simple thing is, you should go to the browser, like just Google thing. Google and just browse it like a virus total, and this whole thing comes under this. Here, in the place of see in the place of URL, you should post the URLs, whatever you want to know whether it is a genuine or not. As we know, HTTP, if you find only HTTP, that comes under HTTP, which is malicious. Thing which HTTP, yes, while it is like HTTPS, it comes under safe thing. So this virus total is a software which gives the clarity and clarification about the URLs which is safe or not, and with this abuse ID, this both you should put it in mind. So if you want to know some URL randomly www. Some URLs, you have to paste it in this URL column and search it. This virus total software says that whether it is a genuine or how many sites of cyber agencies certified it as a is it is a safe one or malicious, or if it is malicious, in how in it gives some rating for this out of 10 how much it is dangerous, out of 100 how much it is dangerous. If it is clean, it shows clean. So it will be more useful for every one of us come out of most of the things, not only the URLs, it also
brings us helps us to find files also whether they are genuine or not. Not only this, and uh, I said one more thing: abuse IDP. That abuse IDP makes us to uh, learn more about uh, IPs, destination IPs, source IPs, whether the IP is a malware IP, whether the IP is a safe, genuine IP in that. And yeah, and next, yes, while we are using this Google, this is the most common thing we use in our day-to-day life. We should be so conscious while using Google and those settings also. With from attacks. See, while opening the while we are using Google accounts, the signing and security option is the most important thing. There we should go with two-step verification. Generally, we go with one our mobile OTP verification. But first of all, we should go with two-step verification. Then this is the most safest thing while we are using Google from attackers and also viruses. Yes, here is the privacy settings, like check my account from Google account and disable, click on my activity. There one can find all the activities like web and app activity. So by that we can make some more consciousness while we are using our Google accounts. So if we find it is whether it is a malicious thing, we should go with deleting the account. So one can delete the activity by deleting activity. So this is a common thing. You may know most of the thing us knows, but why I am particularly mention this particular Google image, this is the most daily uses we go in our day-to-day life. Yes, next, social media. As we know, these attacks these attacks and viruses may attack our profiles also. So the basic and first thing which we should be so conscious is this Facebook. Every one of us having a Facebook, and next Instagram and Twitter, LinkedIn, not for more people. The students which we are evaluating right now, they are using LinkedIn profiles. So cyber stalking, cyberbullying, hacking, frauding, fake profile creation, this all comes under the social media attack. Yes, this is the one type of example. Facebook phishing page. See here, this is the one of the advertisement. How a phishing attack has happened to a social Facebook account. So how can it can be prevented? This is the real case study. The screenshot which I'm showing right now is the $80 which is giving free 80 US dollars coupon to celebrate 100. And this is the most common advertisements which we see in day-to-day life. It's like Amazon's Whole India sale for ₹1. So, we may get laptop. So for lucky draw, bike gift vouchers in that. So be conscious, don't be so attracted, and don't be shared to it comes to see while we get such type of messages to our WhatsApp or normal text message. Generally we just open that link, so there only our failures start. There only our enemy, we are putting whole our data in our enemy's hand. Yes, so so how can we prevent such type of malicious activities or virus activities or phishing activities, whatever it might be, for this Facebook, from this Facebook? And one more thing is this malicious, like receiving message from have you seen this photo of you, and this is the messenger which I have taken a screenshot from one of my colleagues who have faced this thing.
this link is the main door for our data expansion. So don't go with such type of fraud links. Be conscious while you are using Facebook also. So how to prevent? So put your profile on private. Don't put it as public, and don't click on suspicious links. So as I mentioned, while we are mentioning the URLs, be conscious and be safe. Don't click on whatever the URL which you got on your mobile phones or whatever it is. So if you think it is something, if you got some doubts or something like that, just go for virus total and confirm it whether it is safe or not safe. Yes. See here. So, and while we are using our social media sites, don't accept whatever the friend request you receive from your account. Be conscious whether it is a genuine account or is it a fake account. These are the examples, and it can be edited so easily by using our paint options in our systems itself by editing or morphing in such a way. So don't go for that. Yes, here I have shown that. And while we are using our Facebook accounts, your profile image should be private. It should be safeguarded. Don't put it as a public profile. And yes, so in this way we can safeguard our Facebook from social attacks or attackers. And the final thing is fake websiting sites. There we can upload our profile photos in various type of websites. So be conscious. Don't go attract for that. And if you find something like that, just report to the Facebook authorizations, and they will find out whether and they go for further steps and all that. Yes, this is the private settings and privacy. This is the most important thing which I want to mention from whole this scenario. Here we have to safeguard the things by putting more and more privacy options. Yes, here the privacy thing. We have to go for all the settings. See who can see you in that way. And final thing is that we similarly like social Facebook, we have Instagram, LinkedIn, all the profiles. So while we are using each and every social network site, go for privacy options. So by that we can safeguard ourselves from attackers and different types of attacks and viruses and malwares. So be conscious while you are using. And over to Madhusri. Yes, thank you so much, Vedadri, for sharing sharing a wonderful information to all of our participants. Yes, moving ahead, Nobin, we have a question for you. That is, can you please tell us about the Okay, Nobin, so can you hear me? yes. So Yes. you asked about the SQL injection, right? Yes. Yeah, so SQL, so we suppose we should go for a demonstration, practical demonstration on that. Okay, so is my screen visible to all? Yes, Nobin. Okay, I'm audible now? Yes, Nobin, you are audible. Please go ahead. Okay, so let's go for an SQL injection practical demonstration.
So let's see how it's work. So this is a vulnerable application where we will be trying to hack with the SQL injection attack. So here is a bank login page. Okay. So where we will be going to demonstrate the SQL injection. So like this, it's the backend of that login page where you can see here are the application log. Watch what happens here when we interact with the vulnerable application. So when we are going to log in, all the programmings those happens in the backend of a login page will appear over here in the logs. So they are saying us to write a email address which is user at the rate email.com. So we wrote the then we are going for the password. So it's so when I'm logging on it, see it shows that unknown email or password. So see here are the logs which are happening behind this login page, as you can see. So next, when we are going to go for login, they have given another password with a inverted comma. So when we are logging it, it's again showing the application crashed with an unexpected error. What could that mean? See, the error is also given in a red mark on this log, right? See, an error occurred, PG syntax error, which is a language in the which the programmers can understand. The log shows an SQL syntax error. So from here, the hackers understand that it can be hacked by the SQL injection, right? See, it's an syntax error through SQL. So then let's go. Here is the password and the limitations. This is what the application code looks like behind the scene. So this one is the source code for the SQL. So let's go again and type the same thing. So let's log in. See, again, it's happening like this, and the logs are coming over here, limited one, unable to log in, return to the login page. See, enter this one again. Okay. So the code is inserted directly into the SQL string. So the password which entered is a string variable, right? So the string variable has already inserted on this pass value and terminates the query earlier. This is what caused the syntax error we saw in the logs. Here is a log. You can see the syntax error over here. So next, this is the behavior which indicates the application might be vulnerable to SQL injection. So this thing indicates that it can be hacked through SQL injection. So next, so here is a password which is given, and it's an binary password, as you can see. See, it's given quotation space or space 1 equals 1, which is decrement. Double minus means decrement. Then we are going for a login. See, the log is going on. Yes, dear participants, you all were looking, what is this? Yes, The not cracking sure. is already done. See, the bank account is showing over here what we are having in the bank. We are having the balance, we are having the checking. Now the hacker can just transfer your money
to his or to other bank accounts, and he couldn't find like this. The SQL injection happens. See, the password is cracked, and we are in. We successfully gained access to the application without having to guess the password using SQL injection. So we just entered the login. We just cracked the login page, and we entered the main page where the account details is given over here. So like this, the SQL injection happens, and that's all. Over to Madhushri. Yes, thank you so much, Nobin. Yes, you all can practice this, and like, please don't use it on any other applications. But you, for sure, you can utilize this to improve your knowledge. I request Nobin to share the link for this in the chat box so that everyone can have access. Yes. Yes, ma'am, this is not your account. Yes, for try on any other accounts, it may be a cybercrime again. And for your practicing and to improve your knowledge, you can all utilize this. And we have also shared the link in the chat box. And we have our final question for the day. So here is the question for Jitesh sir. Sir, please do answer this question. What are the biggest cyber security threats right now? Jitesh sir, are you there? Yeah, good question, and surely not so easy to answer. And the reason why I say it's not easy to answer is the cybersecurity threats are at various levels. It starts from the basic most level of a school-going student to the point where countries' defense is at risk. You might be seeing various news with respect to, be it Starlink, where hundreds of satellites are being launched. You might be seeing about missiles which are being sent to space to destroy an identified target. So what are all these for? Right? It's a question we should think. And the reason is, if it is something in space, why do we need to destroy it? It is on its own. But is that the case? Okay. So all these are the questions one should think about to trigger the thought process, and it would yield a point where you would realize that remote sensing and control is one of the key parameters when it comes to security aspects of the nation. Imagine if someone is able to hack into the security systems and is able to launch missiles to a predetermined trajectory without the knowledge of the launching nation. What a disaster it would be. And today, there are cybersecurity attacks happening in line with the country's security systems. So that's the highest level of threat that every country today is preparing to face. The next level of threats that we look into is in terms of the banking and finance. Banking and finance industry is one of the most critical and important industry, because with digital transactions, with digital money being into play, anyone at any given point of time is susceptible to it if it is in en masse. And hence the point of using at least a two-dimensional authentication system, which we discussed earlier. Okay, so that's the next level of it. Now, these are two most critical aspects. The next level of aspect, if you have to talk, you take up any of the highly classified information by the local governments. See, here I'm not talking from the perspective of specifically India or any such nation. These are all common threats across the globe. All right. So the next one is the classified information
Today, with digital data in place, and we are not preferring the data to be on paper, surely there is a digital device or a digital hardware somewhere which is hosting onto the data. And there are good number of hackers who are trying to get the data so that they can make the best of benefits for themselves. So this is at a very high level, and that is where the most important aspects are being looked into. But if I have to talk about the threats for the students, which is the community here, social media is the biggest of the threats, followed by the topics where nowadays there is a trend to post videos of self, be it in terms of mimicking someone, be it in terms of creating funny videos, or whatever it could be. And the reason why I see this as a threat is you never will realize how the data is being misused. And while you're capturing those videos, while you are posting those videos, there is all the possibility that you are revealing your personal information. And hence, that I see as a sign of risk. See, if I have to put it in simple terms, every one of us will have a key to our home, right? Now, if I don't lock the door and if I go out, the possibility of my home being secured is least. That's because the key, though I haven't locked. That is one. Two, I lock the door, I leave the key there, right? Even in this case, the securedness of my home is at least. Similarly, whether you set your privacy settings right or not, two, even after setting your privacy settings, if you are revealing your identity, you are at least security. So social media platforms, I would strongly recommend you to use with utmost care. The next level of care that you got to take is your digital transactions when you make using be it Paytm, be it Google Pay, be it Phone Pay, any of these. Next is your conversations. You have to be very careful on what you're conversing, be it over WhatsApp, be it over Viber, or any of the chat tools, because they are susceptible. Though we talk about 16-bit encryption today, end-to-end encryption, where the data cannot be read, government agencies are able to decode what texts are being exchanged for security purpose. That means they are susceptible. Okay, so be very careful. And last but not the least, ultimately it is about communication. Ultimately it is about yourself, your family's security. One example that I wanted to quote is, I had a friend, I have a friend who would post every single topic, be it, I'm planning to visit such and such a place, I have already reached such and such a place, and I am staying in such and such a hotel, and so on. And this series of data that he used to post was actually being followed, and someone could easily put together and say what is the situation at any given point of time in his presence, and his place was completely cleaned while he was away. And after a lot of investigation, it was revealed that it is the social media posts which were being followed that led to the burglary. And this is just one example, and I am sure you people would take care of it. All right. So I hope I have been able to answer, and the threats are at various levels, but you guys take care of yourselves. Yes, thank you so much, Jitesh sir, for answering the question. And thank you, Vedadri and Nobin, also for answering my questions. And I hope now the participants are clear with like how they can be protected from all these cyber crimes. And now we have come to the end of the webinar, and now it's time to say
bye-bye. Before we say bye, I would like to thank Ms. Darshna Pavaskar, Joint Director of Guides, for supporting us so much, because without her guidance, we could have not conducted this webinar. And next, I would like to thank Mr. Krishna Swami sir for being our guest of honor for today and blessing all of our participants and the gathering here. And next, I would like to thank Mr. Jitesh sir, who shared a wonderful information and answered all our queries and questions and the doubts. Thank you so much, sir, for being with us. And next, I would like to thank Nobin and Vidadri, who are supporting us from last 8 months voluntarily to create an awareness about the digital security and space. And lastly, I would like to thank all of our participants for joining us and the YouTube viewers. Thank you so much, everyone. Now, I request everyone to turn on your videos so that we can have a nice click of a picture. And we will also have a very good memory with us. Yes, I can see the beautiful faces. Yes, I request everyone to turn on videos. Yes. Ready, everyone? Okay. Ready, 1, 2, 3. Everyone, cheese. Yes. Hold for a moment. Yes. Thank you so much, everyone. And before we leave, I request everyone to raise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. Please be seated. And thank you all. For more updates, please follow our social media handles, BSG DSG India and BSG India. And we will all see you soon in the upcoming next webinars. And please follow up with our